Ladies and gentlemen, I welcome you all to the Q2 FY2024 post-earnings conference call of Jyoti Resins and Adhesive Limited. Today on the call from the management side we have with us Mr. Patel, Managing Director. As a standard disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risks and uncertainties. Also, this is a reminder that this call is being recorded. I would now request Mr. Patel to detail us about the performance highlights for the quarter that went by, your plans and visions for the coming quarter and years, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. Utkarji, I invite you to give your opening comments. Thank you, Vinayji. Good afternoon, everybody. Welcome to quarter 2 Concall. सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे वर्किंग पे इतना ट्रस्ट किया and you have invested in our company, and we like to take this journey forward with all of you. Yes, of course, Vinayji, quarter 2 was challenging because of due to maybe the monsoon seasons and festival seasons. But anyhow, we maintain good profit margins. And yes, about as I have explained, for the next 3-year journey, we are planning with a good top line with a good EBITDA margin. And I delighted to share with you that Mr. Milan Thakkar has joined us as a COO, and he has 20 years of experience in the field. Milan Thakkar, can you please introduce yourself? Good afternoon. Hello, everybody. Okay, firstly, excited to be on board. Thank you, Utkarsh for putting your trust in me. And, I'm sure with your vision, we will take this journey to the next level. Looks very, very promising, way forward and way ahead. My background, my name is Milan Thakkar. I've spent 20 years in industry, in the allied industries. And my last assignment was I was a CEO for a company called Wallplast, where I was driving the B2B and the B2C business. I spent 7 years with Wallplast and gave them 300% growth in my 7 years despite RERA, COVID, Notbandi, all the challenges. And I hope I will do much more. And I pray to the Almighty and Utkarji to give me guidance to take his vision to the next level. So that's a little bit about me. I look forward to working with all of you guys and growing together and realizing the promoter's vision and taking this journey way forward. Thank you so much. Thank you, Utkarji. Thank you, Milan. We will open the floor for questions now. We have uploaded the investor presentation, so all of you would have gone through it. We are happy to take questions. Please use the option of raise hand to ask a question. Yes, Manoj, you can go ahead and ask a question. Hello. Am I audible? Yes. First of all, let me welcome Mr. Thakkar as a CEO of the company. Looking forward to work closely with them as an investor. And Utkarsh ji, namaste. आपको पहले तो मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत मुश्किल समय में भी हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाकर रखा। मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि पिछले 5 क्वार्टर से अपना टॉप लाइन नहीं आ रहा है, तो इसका क्या कारण है? मतलब वी आर अराउंड 61 crore, 62, in the same range we have been there. Though we have been registering profit, but अपना सेल्स का जो टॉप लाइन है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है? Particularly when we have, despite getting into UP and Delhi state, I thought that this quarter we would have some better top line. So this is my first query.
Should I raise another query or one by one I should come? So we can start with this query I first. think, Kaji, please go. yes. You are very right that our top line is maintained as same as for last 2 quarters. But I like to share with you that as we are in domestic retail segments, all over देखने जाए तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे जब बात करें तो because of the recession period into US and China, but that is good at that view where हम domestic penetrate हुए हैं, so वो इफेक्ट हमारा उसमें नहीं है. बट डोमेस्टिक मार्केट में कैसा है कि जो हमने फोकस किया है वो एग्जिस्टिंग टेरिटरी पे हमने ज्यादा पेनिट्रेशन करने में फोकस किया है. एंड इफ अबाउट यूपी एंड दिल्ली स्टेट्स, so we just recently started that. तो वहाँ पे हमने हमारी प्रोडक्ट का प्लेसमेंट, हमारी प्रोडक्ट का अवेयरनेस, वो प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं. एंड ये सबको बाकी के जो अदर स्टेट्स है जहाँ पे हम ज्यादा हमारी टॉप लाइन बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए ही हमने हमारे प्लान शुरू कर दिए हैं. जैसा आप देख रहे हैं कि मिस्टर मिलन टक्कर हैज जॉइंड अस, सो ही विल आल्सो गिव हिज एक्सपीरियंस टू दिस जर्नी. और उनके एक्सपीरियंस से, उनके गाइडेंस से भी आगे हमको कई सारे जो अपने जो स्टेट्स है वहाँ पे डीप पेनिट्रेशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेंगे. And yes, of course, we have more focus for the carpenter meets, gatherings, dealer meets. So यहाँ पे हम ऐसा चाहते हैं कि ना सिर्फ प्राइमरी सेल बढ़े, लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट है वो हम कारपेंटर के एंड जो हमारे यूजर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, उसके बॉटम लेवल तक जाना चाहते हैं. और इसके लिए हमारी जर्नी में काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं. तो शायद यही रीजन है कि जहाँ पे हम इतने जल्दी से एज अ प्राइमरी सेल पे ग्रो नहीं हो पा रहे हैं. बट डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट ईयर और 2 years के स्पान में वो रिजल्ट अपने को अलग से दिखेगा टॉप लाइन बेस पे. उत्कर्ष जी, दूसरा मेरा ये प्रश्न था कि अपने पास इतना सारा कैश पड़ा हुआ है तो अपन इसको, मेरे ख्याल से बैंक एफडी वगैरह किया वो सब ठीक है, बट अपन, आपको लगता नहीं कि बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लेयर्स है अपने सेम फील्ड में, सेम बिजनेसेस में, उनको अपन एक्वायर करने का वी शुड कंटेम्पलेट टू, वी शुड इवेल्युएट इफ वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, वी शुड ट्राई टू टेक सम ऑफ द कंपनी एंड एक्वायर देम. आर वी थिंकिंग दैट लाइन, उत्कर्ष जी? See, right now we are not in hurry to take any decisions that maybe disturb our existing structure. So you are very right. आगे जाके हमारे plans बिल्कुल रहेंगे. अगर कोई अच्छी opportunity हमको मिलती है तो definitely we'll plan for that. But right now we have the enough capacity of the productions. We are right now utilizing 60% of our capacity. हमने नई कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी प्लानिंग ऑलरेडी कर लिया है. सो जैसा आगे भी अर्लियर मैंने हर कॉन्फ्रेंस में बताता हूँ कि हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, ज्यादा मार्केट शेयर लेना चाहते हैं ये सिंगल प्रोडक्ट में. सो अभी भी काफी कुछ प्लान बाकी है. यस, वी विल यूटिलाइज दिस कैश फ्लो जो हमारे पास इतना रिजर्व पड़ा है. तो डेफिनेटली आगे आने वाले 2 साल की जर्नी में आपको ये सब रिजल्ट दिखेगा. अच्छा, एक पॉइंट और अपना था, प्लानिंग सब हो चुका है, नाउ इम्प्लीमेंटेशन इज. ओके, थैंक यू. एक पॉइंट ये था, अपन काफी मेरे ख्याल से 3-4 क्वार्टर से लास्ट टाइम जब मिला था तब भी बात किया था, अपन एनएससी पर लिस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. कब तक लिस्ट कर देंगे, ऐसा क्या प्लान है मैनेजमेंट का? एनएससी में लिस्ट होने के लिए गाइडलाइंस 75 करोड़ ऑफ नेटवर्थ विद इन 3 years कंटिन्यूस होना चाहिए. सो हम लास्ट ईयर भी है, तो आफ्टर 2 years वी कैन अप्लाई फॉर दैट एंड वी विल डेफिनेटली प्लान फॉर दैट. ओके, थैंक यू. मेरे और भी क्वेरी है वो मैं लास्ट में आता हूँ. ओके मनोज जी, थैंक यू.
We'll take the next question from Satvik Jain. Satvik, you can unmute and ask your questions. Good afternoon everyone. तो सर हमारी जैसे सेल्स है तो लास्ट 5-6 क्वार्टर्स में सेल्स इंक्रीज हो नहीं रही थी, तो इज इट बेसिकली ड्यू टू वन पार्ट इज द मार्केट हैज बीन स्लो एंड देन इज इट आल्सो दैट अदर प्लेयर्स स्पेशली लाइक द लीडर दे हैव बिकम अग्रेसिव इन द मार्केट दैट वी आर नॉट बीइंग एबल टू पेनिट्रेट इनटू न्यूअर मार्केट्स? Not due to competition, because see, as you can see, पूरा जो market है वो काफी सभी industries का down है last 2 quarters से. But as I share, anyhow we have maintained that top line with a good bottom line. The reason behind we have not पहले भी हमने कभी इस तरीके से business नहीं किया, ना हम कर रहे हैं या ना हम आगे भी करेंगे कि जहाँ पे सिर्फ हम primary sell पे focus करें और आगे जाके कोई डिस्टर्बेंस हमारी चैनल में, हमारे चैनल पार्टनर्स या डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स में कोई क्रिएट हो. सो यस, ऑफ कोर्स मे बी वी आर स्लो इन टॉप लाइन, बट वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द गुड एबिटा विथ गुड पेनेट्रेशन. ऑलवेज वी बिलीव दैट कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है वहां से मार्केट्स में वो नीचे से पूल होना चाहिए, कारपेंटर में वो चीज पहुंचनी चाहिए और वहां से एक रिपीट ऑर्डर्स आना चाहिए. तो yes, we are focusing right now in existing states. What we have already develop, हम जो कर चुके वहाँ पे ज्यादा पेनिट्रेशन हम कर रहे हैं. लेकिन आगे जाके जब हमारे मैनेजमेंट में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट जब आएगा तो डेफिनेटली विद इन 2 or 3 quarters you will see the top line is also increasing. So पूरा नेटवर्क पूरा हमने सेट किया हुआ है. Now it is time to just give boost to the market. राइट सर. सर एक लास्ट क्वेश्चन था. तो आई वाज सीइंग दैट रिसीवेबल्स हम ऑलरेडी काफी कम कर रहे हैं कि सेल्स हमारी बढ़ रही है रिलेटिवली एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी आर आल्सो डिक्रीजिंग रिसीवेबल. तो फ्यूचर में भी यही प्लानिंग रहेगी कि कैश फ्लोज मेंटेन रखने, रिसीवेबल्स कम करने एंड फोकस ऑन फर्दर केपेक्स एक बार हम लोग 80-90% यूटिलाइजेशन पे चले जाते हैं? जैसा मैंने बताया कि जो हमारे ऑलरेडी जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुके हैं वहाँ पे डेफिनेटली हम रिसीवेबल करना चाहेंगे. लेकिन आगे वाली जर्नी में जिस स्टेट्स में जहाँ पे हम डेवलप हमारी प्रोडक्ट करना चाहते हैं, आगे भी मोर पेनिट्रेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे शायद ऐसा हो सके कि शुरुआत के पीरियड्स में रिसीवेबल्स बढ़े. But yes, as we have experienced of this product, this market since 16-17 years, so we are very confident with our business model that we are not getting any disturbance regarding this. So जहाँ जहाँ पे भी ऐसा लगेगा हम डेफिनेटली हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और शायद हो सकता है कि वहाँ पे रिसीवेबल शुरुआत के टाइम पे बढ़े. But it will be a combo with जो टेरिटरी जहाँ पे हमारी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो चुके हैं और वहां से लेके हम जो वो प्रॉफिट है वो दूसरे स्टेट्स में डेफिनेटली शेयर करना चाहेंगे टू इंक्रीज द टॉप लाइन. तो ये कॉम्बो रहेगा स्ट्रेटेजी. थैंक यू सर, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. We'll take the next question from Saket Saraogi. Saket, you can unmute and ask the question. Thank you, sir. So actually, I had a question regarding the sales growth itself and over the margins also. As everybody has already asked regarding the sales growth part, I would like to know about the margin. The margin the company is getting now. Last year, if we see the PAT margin is almost doubled, which is now standing close to 25-26%. So I would like to know what has contributed to this margin growth, significant margin growth, and sustainability level of PAT level margins. What it should be? पिछले 3 क्वार्टर में रॉ मटेरियल काफी डाउन हुए. दैट इज द मेन रीजन कि जहाँ पे हमारी बॉटम लाइन इतनी अच्छी ग्रो हुई है. सो लास्ट ईयर से जैसा आपने बताया ऑलमोस्ट डबल. सो वी कैन अचीव, वी आर एबल टू अचीव 33-35% ऑफ एबिटा मार्जिन. सो रॉ मटेरियल काफी कम हुए और उसकी वजह से मार्जिन अच्छे. प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेरिटरीज हमारी अच्छे से डेवलप हुई है वहाँ पे हम हमारे जो प्रमोशंस, जो डिस्काउंट्स है
वगैरह जो पिछले 2-3 क्वार्टर में हम काफी कम कर पाए, तो वहां पे भी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ी है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो हमारी है जिसमें मार्जिन हमारे अच्छे, वो प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन ज्यादा बढ़ा है। तो दिस इज द मिक्स रीजन कि जहाँ पे हम हमारे ओवरहेड्स भी कम कर पाए और प्रॉफिट लाइन बढ़ा सके। So, like, sir, this the sales that we are having this year is down from last year. So, what will the volume level like compared to last year? It is more or less as same, I think, Vinayji. We have shared the data. Yeah. Year on year, our volume is flat. Quarter on quarter, our volume is up around 6%. Just one thing I'd like to know, like, suppose the prices of the raw materials have fallen significantly. So, does the company take price cuts, or how does the company? Because if there's such a gap, then there's a chances that a competition can come and decrease the prices of their product. So, how do we take these things like? See, as if we talk about the competitors, all companies are there कि जो पहले से 4-5 सालों से कर रही है, you know that companies. But we believe always in the quality and service what we have delivered to customers. Customers जो loyalty है that could be earned, right? We cannot buy that. So I don't think so कि only profit margin जो इतना बड़ा gap है और जो discount structure हम pass करें, that is the only reason for that. What quality we have maintained, what service we have maintained, that is the main factor, key factor. Our relationship between customers, our team's relationship. So these all matters. And yes, of course, कि maybe अगर आगे जाके price अगर reduce भी होते हैं in price value, तो भी हम I think 25% EBITDA margin हम maintain कर पाएंगे. That is, we are very confident with that. Thank you so much. We take the next question from Balakrishnan. So I have one question on the carpenter line. So I think for 2-3 quarters, more than 2-3 quarters, we are just seeing that the number of dealers and the number of carpenters is not changed at all, even though we are trying to expand the regions and penetrating existing markets. So is there any reason why we are not seeing increased carpenters and the dealers network? We have already increased our dealer networks, but still not we have upgraded the numbers, I can say, because we are now coming with the proper professional strategy branding. So within 2-3 months, you will see the difference of the numbers, and we have not updated that because it's an ongoing process. If right now we are penetrating on in some states, UP or Delhi, so it's a process that we are appointing dealers daily to daily base. Maybe 20 dealers, 25 dealers, 30 dealers, they are adding to our portfolio. So it will be a difference you will see in the next quarter के जहाँ पे हम पूरे एक अलग नंबर के साथ आएंगे. If I talk about the carpenters, so we are right now registering the carpenters into our loyalty programs. So that is also in process. So we want to share the numbers that after some difference of that quantity. So you will see the difference within after 1 quarter. Okay, yeah, that's it from my side. We take the next question from Harish Shah. Harish, you can unmute and ask your question. Hello. Yes, Harish, please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंपनी की एक्सपोर्ट सेगमेंट में क्या प्लानिंग है अगले 3 साल में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री या जो भी वहां पर पोटेंशियल है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी का प्लानिंग. मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है कि अभी के आप इंडस्ट्रीज में अगर देखोगे तो लास्ट 2 क्वार्टर से जो कंपनियों का सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी था,
वहां पे उनका टॉप लाइन काफी कुछ हिट हुआ है ड्यू टू दिस रिसेशंस एंड वगैरह। एंड दैट इज द रीजन के जहाँ पे डोमेस्टिकली ऐसे देखने जाए तो इंडिया का खुद का कंजम्पशन इतना बड़ा है, तो यहाँ पे उतना हिट नहीं हुआ है। तो मैं ये जर्नी को ही कंसिस्टेंट आगे लेना चाहूंगा। उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत मार्केट शेयर्स है कि जो हमको अचीव करना है। एटलीस्ट 1000 करोड़ ऑफ टॉप लाइन वी आर नॉट थिंकिंग फॉर एनी अदर प्रोडक्ट्स और एनी अदर एक्सपोर्ट मार्केट्स। Okay. वी वांट टू डू विद इन इंडिया बिकॉज आज 6000 करोड़ का मार्केट जो ऑलरेडी पीडीलाइट कर रहा है, तो वी वांट टू अचीव दैट एटलीस्ट 1000 करोड़ ऑफ मार्केट शेयर फॉर us. डेफिनेटली सर, मुझसे मोर देन ट्वाइस थ्राइस हो सकता है। आई सी द वेरी मच पोटेंशियल इन इंडिया एज वेल एज अगले 3 साल में भी। आई वुड से के अभी वॉर सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आफ्टर 3 years डिमांड बढ़ेगी, वॉर ओवर हो जाएगा, रीडेवलपमेंट वर्क आ जाएगा। फॉर दैट टाइम आई होप के आप एक्सपोर्ट का भी प्रोजेक्शन अभी से शुरू कर दे। एज ए शेयर होल्डर आई विल से दैट। ओके, थैंक यू, माय क्वेश्चन इज ओवर। Thank you, Arjun. Thank you. थैंक यू। We take the next question from Puneet Bhargava. Puneet, you can unmute and ask the question. गुड आफ्टरनून सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। Good सर afternoon. जैसे कि सर अपन हर 2 से 3 साल में अपना कैपेसिटी डबल करने का प्रोजेक्शन रखते हैं। जैसे अपन ने 17, 19 एंड 22 में डबल कर रहे हैं, तो क्या अभी अपना 24 में भी डबल करने का कोई केपेक्स प्लान है? Right now, we have enough capacity to grow more. And yes, definitely we'll plan, but not in 2024, but we'll start from 2025. हमारी कैपेसिटी डबल करने का प्रोजेक्शन वो टाइम पे लेंगे, शायद ग्रीन फील्ड करे या ब्राउन फील्ड, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस ऑफ द टेरिटरीज एट दैट टाइम। बट यस, वी विल प्लान इन 2025। सर जैसे अपन देख पा रहे हैं अपना पार्ट मार्जिन अराउंड 24-25% चल रहा है। कंपेयरिंग टू इंडस्ट्री लीडर पिडीलाइट, क्या हम कुछ केमिकल्स में या जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसमें हम कुछ वेरिएशन लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पार्ट मार्जिन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री लीडर? नहीं, सी पे एज ए पिडीलाइट अगर आप देखने चाहे तो देयर आर वेरियस ऑफ प्रोडक्ट्स into the balance sheets, so we cannot compare that because as a Pidilite there are more than 400 products. So ये जो हमारी products है that is only white glue, but yes, already मैंने जैसे बताया कि raw materials जो down हुए हैं, that is main reason जहाँ पे इतना margin हमारा आ रहा है। and बाकी का margin भी जैसा मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्ट खुद स्ट्रांग होती है, प्रोडक्ट में रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ता है, तो ऑब्वियसली एक रिपीट बिजनेस का प्रॉफिट अलग ही होता है ओनली फॉर द कंपेयर टू प्राइमरी बिजनेस। सो यस, वो चीज भी है। सर जैसे कि आपने अभी पहले भी बताया, हेलो, I think yeah, Puneet, go ahead. कि सर जैसे कि अभी अपन देख पा रहे हैं कि आप अभी नए स्टेट्स में एंटर कर रहे हैं, और जो अभी आपने बताया भी जैसे कि कारपेंटर का नंबर अभी आप लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया, जो काफ़ी मेरे अनुमान के हिसाब से काफ़ी बढ़ गया होगा। मगर क्या हम जान सकते हैं कि जैसे आपने लास्ट नंबर दिया था 2021 में जो था 3 लाख कारपेंटर्स के आसपास, तो अभी हम मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना एडिशन कर रहे हैं कारपेंटर्स में? करीबन 20-30% हमने बढ़ाया है वो फिगर से। सो वी आर क्लोज टू रीच 4 लाख कारपेंटर्स। थैंक यू सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Manoj, please go ahead. एक उत्कर्ष जी ने आपने शुरुआत में बोला था कि इस क्वार्टर में हमारा जो प्रेशर रहा था टॉप लाइन में
मानसून के कारण वगैरह वगैरह कुछ और भी कारण रहे हैं। तो अभी जो ये क्वार्टर है जो अक्टूबर से शुरू हुआ है और इसमें दीपावली भी है और बाकी फेस्टिवल भी है, तो अपना ऑर्डर इनफ्लो कैसा है सर? वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर Q3 एंड Q4, क्योंकि ऑल ओवर देखने जाए तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में Q3 Q4 की डिमांड ऑलवेज ज्यादा रहती है, एज यू कैन गो विद द हिस्ट्री। तो यस, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद द Q3 एंड स्पेशली फॉर Q4, because in a Q1 अगर देखने चाहे तो practically we need to understand the markets in Q1, April and May month, that is a migration period of the laborers पूरे इंडिया से, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, यानी मतलब जो राजस्थान यूपी से लोग हैं वो टूवर्ड्स मैरिजेस, शादी वगैरह जो होते हैं वहां पे मई मंथ में जाते हैं। तो ऑलवेज Q1 थोड़ा सॉफ्ट रहता है, Q2 बिकॉज ऑफ द मॉनसून एंड फेस्टिवल्स, ऑगस्ट मंथ, महाराष्ट्र में गणेश आ गया और पैन इंडिया भी वो फेस्टिवल्स चलते हैं, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। एज कम्पेयर टू, यू कैन सी दैट इज अ टोटल 40 to 45% एंड 65% अराउंड Q3 Q4। मेरा अगला पॉइंट मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, पर एक पॉइंट ये है उत्कर्ष जी, अपना सितंबर में जो एजीएम था, पहले एजीएम अपना फिजिकल होना था और आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट आई वुड कम द वे एवरी टाइम आई कम, आई थॉट दैट आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट यू एंड जगदीश जी, बट सडनली आपने उसको वर्चुअल कर दिया, तो मेरे को थोड़ा वो डिसपॉइंटेड किया, आपसे मिल नहीं पाया। तो मैं आई थॉट दैट आई मस्ट शेयर दिस विद यू। You are most welcome anytime. I know that. Okay, sir. Thank you for this is what from my side. Wish you all the very best. Thank To you. you and your new team, Thank you, Mr. Manoj. Thakkar particularly. Thank you, Manoj ji. We'll take the next question from Rajiv. Rajiv, you can unmute and ask your question. Good afternoon, sir. I have a few sets of questions. First being, can you throw some light on the size of white glue market and your focus area? व्हाइट ग्लू मार्केट में रिटेल, डोमेस्टिक रिटेल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कम से कम वो 7,000 करोड़ का मार्केट है, और वो आई थिंक 7 to 10% से इंडस्ट्री ग्रो भी हो रही है, एंड सेम उतना ही मार्केट करीबन एटलीस्ट 40%, 4,000 to 5,000 करोड़ का मार्केट इंडस्ट्रियल मार्केट है, OEM